Hello students, continuing with this chapter permutations, the topic which we are going to start today is that is factorial notation. पिछली बार हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अप द परम्यूटेशंस। नंबर वन, दिस सिंबल इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अगर मैं if I write 7 and this symbol, it means it is called 7 factorial. And the same can be represented by this number elongated L with 7. तो इसका मीनिंग भी यही है 7 factorial. जो सिंबल हम यूज करेंगे which is in the NCERT book, that is this one. So आगे जितनी भी बार मैं यूज करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस सिंबल, आई एम गोइंग टू यूज दिस सिंबल. नाउ इफ आई राइट 7 फैक्टोरियल, व्हाट डज इट मीन? इट इज द कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स राइट फ्रॉम 1. इसका मीनिंग है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Similarly, if I write a number, let's say 8 factorial, it means 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. क्लियर? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं 8 फैक्टोरियल लिखता हूं तो क्या मैं इसको 8 into 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? 7 फैक्टोरियल का मीनिंग वही है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये रहा, ठीक है? तो इस पूरे की जगह मैं 7 फैक्टोरियल लिखता हूं. अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, कंटिन्यूइंग विद दिस, तो 6 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. तो इन नटशेल क्या मैं लिख सकता हूं? इट इज 8 minus 1 8 minus 2 फैक्टोरियल, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 8 into 8 minus 1 फैक्टोरियल, यानी 8 into 7 फैक्टोरियल को लिखा 8 into 8 minus 1 फैक्टोरियल, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल को लिखा 8 into 8 minus 1 into 8 minus 2 फैक्टोरियल. If I take the number n, and please remember this factorial notation, it is applicable only on the whole numbers. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स पे नहीं होगी और किसी पे नहीं होगी, होल नंबर्स पे होगी. तो व्हेन आई से n फैक्टोरियल, so n factorial, as I have written 8 factorial equal to 8 into 8 minus 1 factorial. So n factorial can be written as n into n minus 1 factorial, right? Now here, what is n? N is a natural number. N being, let me write n belongs to the natural number. N belongs to the set of natural number. Now two things. I said फैक्टोरियल इज डिफाइंड ऑन होल नंबर्स. फैक्टोरियल जो है सब होल नंबर्स पे डिफाइंड है, पर यहां हमने n को ले लिया नेचुरल नंबर, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज देखें, इफ n इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया? 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n1 है, ये बना 1 minus 1 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल इज 1 into 1, दैट इज 1. 1 फैक्टोरियल का मतलब 1. अच्छा, ये बना 1 into 0 फैक्टोरियल. अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे, अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 रहेगा. इफ आई से 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो इट विल रिमेन 8. 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, इट विल रिमेन 9. सो 1 into 0 फैक्टोरियल विल रिमेन 0 फैक्टोरियल. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट 0. अगर ये 0 होता, कंप्लीट 0, तो 1 into 0 0 ही बनता, बट इट इज नॉट 0, इट इज 0 फैक्टोरियल. ठीक है? तो ए नंबर अदर देन 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल रिमेन सेम, तो वैसा ही रहेगा. ठीक है? तो 1 बन जाएगा 0 फैक्टोरियल. तो व्हाट आई मीन टू से इज, प्लीज रिमेंबर दैट 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1.
0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आया 1 के. नाउ लेट मी प्रोसीड माय रिजल्ट. I can write now, I can elaborate it. n फैक्टोरियल को अब क्या मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल. सेम कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इट रीचेस 1, जब तक 1 नहीं पहुंच जाए. सपोज लास्ट में अगर मुझे लिखना हो तो व्हाट आई विल राइट, n factorial can be written as n minus 1, n minus 2, so on. If we continue this, n minus 3 आएगा, n minus 4 आएगा and last will be n minus n factorial. ठीक है, तो प्लीज सुन ले, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n into n minus, rather I can write it as n factorial equal to n into n minus 1 factorial also, then n minus 1 into n minus 2 factorial, and n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial and so on. It can be continued till 1. जैसे हमने 8 फैक्टोरियल का किया था, 8 को लिखा था पहले 8 into 7 फैक्टोरियल, फिर लिखा 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, फिर हम इसी तरह लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, और ये n minus n 0 बन जाएगा, 0 फैक्टोरियल कितना बन जाएगा 1 तक बन जाएगा. That means the product will continue till 1. Right now, two important things. One is 0 factorial is always 1, that you should note, and number 2 is this factorial we define it on the, if I now take away 0 factorial is 1, then it is defined on the natural number, that means 1 factorial, 2 factorial. It will never be defined on the negative integers, what I mean to say. So let me erase this one. And now I am starting with the exercise. It is exercise 7.2, which is based on this factorial. Now please listen. Question 1. The first question is evaluate 8 factorial. So it is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now 8 sevens are 56, 6 5 30, 30 into 4 120 into 6, right? So it is 56 into 12 6 are 70, or let me multiply this first. 56 into 12, 12 6 are 72, carry 7, 12 5 are 60 and 7, 6 7, 0 into 6, and it will be 4032, that's the answer. Second part of the same question is evaluate 4 factorial minus 3 factorial. Now you have the choice. What you can do is either you evaluate the value of 4 factorial, 3 factorial separate and then subtract, or I can write जो हमने पढ़ा था कि n factorial को लिख सकते हैं n into n minus 1 factorial. So 4 factorial can be written as 4 into 3 factorial minus 3 factorial. Now this 3 factorial is common into, यहां बचा 4, यहां बचा 1, तो ये बना 3 factorial into 3. 3 factorial का मतलब 3 into 2 into 1 और ये 3, टोटल बन जाएगा 3 3 9 to 18. So that's the answer for the second part. So let's move on to the next question. Question 2.
3 factorial plus 4 factorial equal to 7 factorial. No, it is not, but let's prove it. What is LHS? 3 factorial plus, can I write it as 4 into 3 factorial? 3 factorial common, 1 plus 4, so it is 3 factorial into 5. 3 factorial is 6, 6 into 5 is 30. I am writing it directly now. Let me take RHS. It is 7 factorial, which will be 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 7 6 are 42, 5 4, 20, 20 3 are 60, 62 are 120. Now 12 2s are 24, carry 2, 12 4s are 48 and 2 50. 5040 is the answer. So LHS is not equal to RHS. Therefore, LHS is not equal to RHS. So this statement is not true. Let me take up the next one. Question 3. It is compute 8 factorial upon 6 factorial into 2 factorial. Now, it's not wrong if I evaluate 8 factorial. मैं 8 factorial को evaluate करता हूँ, फिर डिनोमिनेटर को evaluate करता हूँ, फिर डिवाइड करता हूँ. गलत नहीं होगा, लेकिन एक सिस्टेमेटिक वे से नहीं होगा, लेंथियर हो जाएगा. आई कैन राइट इट एज 8 into 7. This I told you. N factorial is n into n minus 1 into n minus 2 factorial. तो मैं तब तक इसको लेता जाऊंगा आगे जब तक मुझे 6 factorial नहीं मिल जाए. तो 6 आया तो मैं factorial लगा दूंगा. तो 8 can be written as 8 into 8 minus 1 into 8 minus 2 factorial. Correct? Upon 6 factorial as it is. 2 factorial means 2 into 1. Clear? ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 sevens are 28 is the answer. So let me move on to the next question. Question 4. It is if 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial is equal to x upon 8 factorial, find x. जैसे 1 upon 6 factorial को ऐसे लिखेंगे प्लस 1 upon, इसको लिखूंगा 7 into 6 factorial is equal to x upon, इसको लिखूंगा 8 into 7 into 6 factorial. I think I am clear to you. Now next, what's the LCM of this and this? देखिए 6 factorial कॉमन है दोनों में और 7, तो LCM बनेगा 6 factorial into 7. डिवाइड करो दिस बाय दिस, 6 factorial कैंसिल, 7 बचा, 7 ऊपर आ जाएगा, प्लस डिवाइड दिस बाय दिस, 1 into 1 is 1 इक्वल टू x upon 8 into 7 into 6 factorial. Can I cross 6 factorial, 6 factorial, 7 and 7, right? So it is 8 equal to x upon 8. Therefore, x equal to 64 is the answer, final answer. So let me move on to the next one. Question 5. The question is
evaluate n factorial upon n minus r factorial. First part, when n equal to 6, r equal to 2. Let's try it. n is 6, तो ये क्या बनेगा 6 factorial upon n is 6, r is 2. So it is 6 factorial upon 4 factorial. So it is 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial cancel and 30 is the answer. Second part of the same question. Now n equal to 9 and r equal to 5. So it is 9 factorial upon 9 minus 5 factorial. So it is 9 factorial upon 4 factorial, which can be written as 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon. Why I have taken 4 factorial? Because in denominator I have got the same. Cancel, and 9 8s are 72 into 6 5s are 30. 30 into 7 is 210. So 21 2s are 42, carry 4. 21 7s are 7 1s are 7, 7 2s are 14. 151 and then 0. So that will be the final answer. So by this we completed this exercise. This was a short exercise. So in the next video we will start with the questions using the formula of permutation.